Welcome back. We were doing the chapter Lost Spring. And in our previous session, we had completed with the story of Sahib-e Alam, right? And in that, we had learned that Sahib-e Alam, the name signifies that he is the Lord of the universe. But ironically, he was a rat picker, यानी कि बिल्कुल opposite. Sahib-e-Alam doesn't know what is his name, what is the meaning of his name actually. They are the one, इनके parents वो हैं जो शायद बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई थी उस वक्त में, या फिर might be they did not have enough food there and they sought refuge in our country. तो जो normally refugees होते हैं, ऐसा नहीं है सबके साथ में, there are so many colonies which are refugee colonies, but it has taken a long journey कि इनको अपनी एक identity, means they are the resident of, अभी उनका क्या है, they are resident, they are not citizens. So जो basic rights होते हैं like education or health or hygiene, anything that they are not getting. Moreover, it is also the lack of understanding by the politicians, जो time to time इनको पैसा तो देते हैं, but they never understand कि जब overall development होगा, तो the development will take place for everyone. And that is why ऐसे जो लोग हैं, maybe it's not that कि Sahib-e-Alam is an you can say exceptional case जो पढ़ना भी चाहता था, खेलना भी चाहता था, but slowly what happens is such people, they are pushed towards crime, they are pushed towards other criminal activities which may not be good in the long run. They do not get enough food, so malnutrition. They do not get health facilities, so they are prone to many diseases. That is what the chapter, the first part, has conveyed. Now we are moving towards the second part, which is the story of Mukesh. Mukesh insists on being his own master. Now, what does it mean? What does it sentence mean? Means he wants to be independent. He doesn't want to work under anyone. मतलब वो अपने आप अपना एक गराज खोलकर, he wanted to live, survive for himself. I will be a motor mechanic, he announces. So वो बताता है, that is to the narrator, that one day he inspires to be a motor mechanic, because this particular question you can find in most of the questions, even whether it is pre-boards, boards, and इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आता है, हाउ कैन ही बिकम अ मोटर मैकेनिक. मतलब what does, यहाँ पर I think this question is there in the NCERT also, and this is one of the repeated questions in the boards as well as pre-boards and all kind of, मतलब वो क्या बनना चाहता था और कैसे बन सकता है. It is but natural कि if we want to become anything, हम कुछ भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारे जो स्किल्स हैं, जब तक वो हमारे अपग्रेड नहीं होते, उससे रिलेटेड जो हमारा एजुकेशन है, अगर वो हमारा नहीं होता, तो we are not able to, we would not be able to aspire, continue with that, pursue with that dream. Do you know anything about cars? The narrator asked. I learned to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. मतलब यहाँ जो ये looking straight into my eyes है,
this is that he was very confident. पेपर में ऐसे आपके क्वेश्चंस जो है कई बार आते हैं, these kinds of questions कि what is the tone of the person या फिर what do you find. So here he wants to say that he is confident. His dream looms like a mirage amid the dust of street that fills his town Firozabad, famous for its bangles. Again, this particular sentence has come in the exam. What does it mean? मतलब मिराज क्या होता है? आंखों का धोखा. Mirage is something which is illusion. Mirage is something illusion. So she says that it looks as if it is an illusion because जहां वो रहता है, that particular town is famous for bangle making, and that is traditional bangle making. Means the people are engaged in the traditional business. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. Means this is a traditional business in that particular town. इसका मतलब है कि ये वहां का ट्रेडिशनल बिजनेस था. और ऐसी जगह जहां पर द बिजनेस गोज ऑन इन द ट्रेडिशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट to move away from that particular tradition and go to something else. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, dingy cells without air and light. That is law. If N force could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours off, often losing the brightness of the eyes. मतलब वहां पर लोगों को नहीं पता है that child labor is a crime. And ये जो लिखा हुआ है, this is the hazards of working in the bangle making. मतलब एक तो जो वहां भट्टी होती है, फर्नेसेस होती है, दे आर टू हाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. सेकेंडली बिल्कुल छोटे छोटे एकदम डिंजी, छोटे छोटे जहां हवा लाइट कुछ नहीं आती है. एंड अगर ऐसी जगह पर होंगे तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली दे वुड बी exposed to respiratory illness, they would be exposed to many other illness which are associated with working in such hazardous industries. तो वो कहती है कि अगर ये लॉ प्रॉपरली एनफोर्स होगा तो वहां जितने बच्चे काम करते हैं ना, ये सब बच्चे जो हैं बेचारे फ्री हो सकते हैं, जहां वो स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, मतलब वो अपना पूरा दिन बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और कई बार ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और कई बार दे हैव टू इवन लूज देयर आई साइट, दे बिकम ब्लाइंड. Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मतलब जब ये मुकेश को बोलती है कि मैं उसके as he volunteers, जब वो खुद volunteer मतलब आगे बढ़कर किसी काम को करना, to take the initiative, he took the initiative and asked the narrator to come to his house, and वो बड़ा खुश है कि उसका जो घर है वो इस वक्त में rebuilt हो रहा है. मतलब they are so satisfied with things which are there. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. मतलब जब वो वहां से जा रही होती है तो she sees that the entire area जो है वहां एकदम narrow streets है, and they are all very filthy, बहुत ही गंदे थे, and the houses were
हाफ बिल्ट, आधे अधूरे मतलब कि बने हुए घर थे, जिनके दरवाजे वॉबल मतलब हिल रहे थे. देयर वॉज नो हाइजीन, नो सैनिटेशन, नो एयर, नो वेंटिलेशन. कोई वेंटिलेशन नहीं था. और वहां इंसान और जानवर एक साथ रह रहे थे इन अ प्रिमेबल मतलब इन अ वेरी पुअर स्टेट. वैसे तो प्रिमेबल इज एंशंट, लेकिन यहां पर इट मींस अ पुअर स्टेट. फिर वो उसको लेकर जाता है. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन. ऐसे ही टूटा फूटा सा एक मतलब कि डोर है जिसको वो पैर से मारकर खोलता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, आधा अधूरा. In one part of it thatched with dead grass. Dead grass मतलब सूखे ग्रास से जो है रूफ बना रखा है. Is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. वहाँ खाना बन रहा था. Means that may be the kitchen. On the ground, a large, enlarged aluminium platters. Now this aluminium, grass, ये सब जो है they are the indicators that they were living in the squalor of poverty. ये सब इंडिकेट करते हैं कि वो लोग एक्सट्रीम पोवर्टी में रह रहे थे. मतलब ये सब कुछ ये दिखा रहा है कि दे ऑल वर लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी. On the ground, a large aluminium platters, in large platters are more chopped vegetables. A frail means very weak, young woman is cooking the evening meal for the family. Means she is a daughter-in-law. Through eyes filled with smoke. मतलब कि वो फर्नेसेस है, भट्टी है, तो उसकी आंखों में एकदम स्मोक भरा, बट वो स्माइल कर रही है. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years. Not much older in years. मतलब she's not too old. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, in charge of three men, her husband Mukesh and their father. मतलब यहाँ पर वो पूरी जिम्मेदारी, she has begun to command respect मतलब she has she has already started fulfilling her duty as a perfect bahu. उनके घर में कौन कौन है? मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के फादर. When the older man, that is father, enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings a wheel closer to her face. मतलब जैसे ही उसे लगता है कि पिताजी आ रहे हैं, तो वो दरवाजे के पीछे मतलब जो सॉरी वॉल जो है उसके पीछे छुप जाती है और अपने घूंघट को, व्हील मतलब घूंघट, उसको जो है कवर करती है. बिकॉज दैट्स द हिंदू ट्रेडिशन, नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन, कि हम लोग अपने फादर इन लॉ के सामने नहीं आते हैं विद आवर फेस अनकवर्ड. एज कस्टम डिमांड्स, daughters-in-law must veil their faces before male elders. अपने बड़ों के सामने उन्हें जो है घूंघट डालना पड़ता है. ये जो पूरा है ना बच्चा यहाँ तक, this tells that the family and the families like Mukesh are still impoverished, not only in respect of money, but also in the respect of culture, tradition. जहां हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, women empowerment, women should be allowed to work, women should be allowed, वहां पर still such tradition persists. यहाँ पर they want to tell this thing. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard work, hard labor, first as a tailor, then a bangle maker. पहले वो एक दर्जी थे, and then he became the bangle maker. He has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Means
they are so poor that he could not send his children to school, मतलब they are uneducated. और उन्होंने उसको क्या सिखाया है? अपना ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मेकिंग द बैंगल्स दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम हिज फादर टू द चाइल्ड. अब दिस केम इन द एग्जाम. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी. ये आपके पेपर में आया था. दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डज इट मीन. Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मतलब उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपके जो हस्बैंड है, मतलब कि हस्बैंड है, he is blind, तो she is not saddened, वो दुखी नहीं है. They have accepted it as a part of their destiny. मतलब यहाँ पर what does the author imply is कि they are not ready to fight against the destiny. उनको लगता है कि ब्लाइंड होना उसकी किस्मत में था, इसीलिए वो ब्लाइंड हो गया. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. मतलब वो पूछती है कि भाई भगवान का दिया हुआ जो हमें जो डेस्टिनी दी है, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? तो दे हैव एक्सेप्टेड इट विद सेक्लूजन, मतलब कि दे हैव एक्सेप्टेड इट विद हिज रेजिग्नेशन कि जो हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. मतलब कि they are living with the stigma of their caste. वो अपने कास्ट में पैदा होने के उस बोझ में ही बैठे हैं. They are burdened with they are not able to fight against the law. They do not know how many laws have been made for such people. बस वो अपने उस कास्ट को और अपने उस लाइनेज को एक्सेप्ट करके they are just making bangles, which you can see common in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheel handcars, pushed by young men along the narrow lanes on the shanty town. अगर आप उनके घर में जाओगे, उनके घर के जैसे किसी के भी घर में जाओगे, you will find number of colorful glass bangles. lie in mound मतलब उसका पूरा ढेर. in unkempt yard मतलब untidily, गंदगी में. piled up मतलब उसका कहने का मतलब है piled up in an unhygienic environment. और बाद में 4 मतलब कि 4-व्हीलर मतलब ठेले के अंदर उनके घर के जो मेन होते हैं वो उनको लेकर जाते हैं बेचने के लिए. And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil, this is आपका जो है, this is flames of flickering oil lamps is electrician. Sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circle of bangles. और पास में डार्क हटमेंट्स मतलब डिंजी सेल्स, एकदम अंधेरा, वहां पर जहां पे ऑयल लैम्प्स हैं जो कि फ्लिकर करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, वहां आपको छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप सब जो है बैंगल बनाते हुए दिखाई देते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. This is a sarcastic comment. उनका कहना है कि when darkness में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, but if they come out in the bright sunlight, often they lose their eyesight.
अंधेरे से नहीं, उजाले से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। मतलब वो इतने डिंजी एरिया में काम करते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल अंधेरे को देखने की उनको आदत हो गई। दैट इज वाई they often end up losing their eyesight before they become adults, और इसी वजह से they often lose their eyesight. सविता, अब वहां पर एक बार आया था पेपर में, हु इज सविता, वी डोंट नो, मे बी सविता इज ऑल्सो अ यंग गर्ल अमंग ऑल दोज गर्ल्स जो वहां पर काम करती है। एक बार आया था पेपर में, once it came, because in the entire chapter there is no mention ki Savita, who was Savita, but maybe she was a child labor who was working there. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass. वो भी वहां पर जो है बैंगल्स बना रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. Tongs आपके होते हैं चिमटा, घर में वो चिमटा होता है ना पापड़ वगैरह रखने के लिए जिसे पकड़ते हैं, दैट। तो वो उसके जो हाथ हैं दे आर वेरी फास्ट, दे मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन इज सिमिली। यहाँ पर जो लाइक द टोंग्स ऑफ है ये आपका सिमिली है, एंड इफ ओनली दिस मूव मैकेनिकली आता तो ये एलिट्रेशन है, पर ये पूरा आएगा तो सिमिली है। And such questions are part of your syllabus, so you can expect. उसके हाथ जो है मशीन की तरह चलते हैं, फास्ट। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helped make. मतलब क्या उसको इसका सिंबल पता है? For an Indian woman, bangles are the, you can say, symbol for many things. There is one very famous poem of Sarojini Naidu, and that particular poem had beautiful meaning. Means उसके अंदर था कि जो colors of bangles को they have associated with the moods, like yellow color they say youth, red color for the married, then purple color for the middle age. So she had symbolized these colors with the age also. There was one very beautiful poem by Sarojini Naidu. So for an Indian woman, bangles are symbol for happiness, for her marriage, for every auspicious account. It symbolizes an Indian woman सुहाग, auspiciousness in marriage. लेकिन शायद सविता को इतना नहीं पता। It will dawn on her. It will dawn on her. मतलब one day she will realize suddenly, शायद जिस दिन उसको उसकी शादी होगी उस दिन शायद उसको इस चीज को वो समझेगी। When her head is draped with red veil, मतलब सिंदूर, her hands dyed red with henna, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, red bangles rolled in onto her wrist. There is, ये पूरा का पूरा जो है, you have repetition as well as आपका alliteration. red जो कलर है रिपीट हो रहा है। जब उसके हाथों में मेहंदी होगी, उसके सिंदूर लगा होगा मांग में, जब उसके when she will be also wearing the red bangles, शायद तब उसको समझ आएगा that what the bangles symbolize. Like the old woman beside her who became one many years ago. उसके साथ में जो औरत बैठी है जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. हाथों में bangles हैं which symbolize she is married but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She makes the statement that they have never eaten a full meal
She says in a voice drained of joy. Drained of joy मतलब sorrowful. Drain मतलब निकल जाना, सुखा देना, तो जिसमें कोई खुशी नहीं है, without any happiness. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. मतलब वो कहते हैं कि यही शायद उसने जिंदगी में कमाया है. She has reaped मतलब this is what she has earned. Though she has worked hard, but never they have eaten full meals. इससे आप समझ सकते हो कि in फिरोजाबाद how dreadful the situation is. Her husband, an old man with a flowing beard, lambi lambi daadi. I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. बस मैंने एक घर बनाया जिसमें लोग रह सकते बस. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. मतलब इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है as if शायद ही इज कंटेंटेड कि बाकी तो वो भी नहीं कर सके हैं, लेकिन उसने तो कम से कम एक छत अपने लिए बना लिया. ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड. कम से कम उनके सर पर एक छत तो है. शायद बाकी लोग वो भी नहीं बना पाए हैं. उनकी जो सिचुएशन है दैट इज वर्स देन दिस मैन. इस आदमी से भी शायद बदतर है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Matlab, every house there is living in the squalor of poverty, yet they are following their traditional business. The young men echo the lament of their elders. This came in the exam. The young man lament. Lament मतलब regret. तो echo the lament मतलब जो उनके बड़े बोलते हैं उसी को वो दोहराते हैं. They just repeat the same regret what their elders do. They have done nothing special. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. मतलब वैसे का वैसा ही रहा है. सालों पहले उनके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, they were suffering. Now the young people are suffering, but there is no change. Again, this one is a very important one. Very, very, very important. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Years of mind-numbing मतलब जो दिमाग को सुन्न कर देता है. Which numbs your mind. उतना hard work. मतलब they have been monotonously doing this and they have lost all their initiatives and ability to dream. They have forgotten to dream. They have been working hard so that they are able to fulfill their stomach. But इतना उन लोगों को exploit किया गया है that that exploitation has completely killed their initiative. अब वो पूछती है why not organize yourselves into a cooperative. आप लोग अपने आप को एक cooperative में क्यों नहीं organize कर लेते हो. Now what happens when you are organizing into a cooperative? In the farmers मतलब जहाँ पे बिजनेस फार्मर्स अगर होते हैं, अगर वो लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में इनिशिएट करते हैं एंड इफ देयर इज समवन जो उनके साथ डील करके उन सामान को एक साथ ले जाकर कहीं बेचे एंड द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, दे वुड बी बेनिफिटेड. सेकेंडली,
अब इन सबको जो सामान बनाना पड़ता है उसके लिए कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लाना पड़ता है. सो इफ दे आर इनटू द कोऑपरेटिव, व्हाट विल हैपन इज कि वो लोग अपना जब सामान लेकर आते हैं, नाउ दे डोंट ब्रिंग रॉ मटेरियल्स इन क्रोर्स, तो 100 रुपीज का लेकर आते हैं. तो इफ दे आर पूलिंग अप, एक साथ अगर वो पूल अप करके रिसोर्सेज लाएंगे तो उनको वो भी सस्ता पड़ेगा. तो इफ दे फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव, थोड़ा सा बेटरमेंट रहेगा सिंस दे वुड बी हैविंग बिट प्रॉफिट. इसीलिए जो नरेटर है वो उनसे पूछती है, ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. मतलब वो वहां पर मुकेश के साथ में जो और लड़के हैं उनसे पूछती है. विशियस मतलब अ सर्कल विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको वहां पे लोगों ने, जो मिडिल मैन होते हैं, उन लोगों ने जो है इनके पूरी फैमिली एंसेस्टर सबको ट्रैप कर रखा. उनसे अगर बाहर निकलना है तो दे कैन फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव्स. तो वो जवाब देते हैं, अगेन एन इम्पोर्टेंट वन, even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो कहते हैं अगर हम ऐसी हिम्मत भी करेंगे ना तो भी इंस्टेड ऑफ एनी बेनिफिट we are the one who will be hauled by the police. मतलब पुलिस हमें एक्सप्लॉइट करेगी, हमें खींच के ले जाएगी एंड जेल में डालेगी, कोई ना कोई गलत इल्जाम लगा. We would be wrongly convicted. मतलब they are so scared that they would be wrongly convicted. This shows that how much exploitation is there. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. अरे वहां आपको ऐसा कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा जो उनको एक रास्ता दिखाए by thinking differently. Their fathers are as tired as they are. मतलब the entire tradition has been that they are only exploited and no other way. They talk endlessly in a spiral. Spiral मतलब घुमावदार. That moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनकी बातें शुरू होती है मतलब जलेबी की तरह, जो घूम फिर कर गरीबी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्रीड, इनजस्टिस, इन्हीं के चारों तरफ घिरी हुई. दे आर सर्कल्ड बाय ऑल दीज थिंग्स ओनली. either they are living in poverty or they are exploited or they have the मतलब कि इसी वजह से वो उसी में they are encircled. Listening to them, this is also one of the question which came in the exam. I see two distinct worlds. मतलब यहाँ दो अलग अलग कौन है, एक वो जो रिच पीपल, those who are greedy benefactors, जो इनका फायदा उठा रहे हैं, और दूसरा ये जो लोग मुकेश और मुकेश की जैसी फैमिली, those who are living in the squalor of poverty. I see two distinct worlds. One of the family caught in web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. ये पहला, मतलब यही आपके पेपर का क्वेश्चन आता है कि what does it mean? What is this two different words? मतलब एक तरफ वो सारे rich, those who are enjoying by exploiting them, and दूसरी तरफ ये poor, those who are born in the caste of bangle making and those who are not able to come out of that stigma. The other, a vicious circle of the sahukars, middlemen, policemen, keepers of law, bureaucrats and politicians. One who is facing the injustice and the second one who are exploiting by doing injustice. Together they have imposed a baggage on the child that cannot be put down.
और ये दोनों जो है, मतलब कि शी फील्स दैट दीज टू टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड लेबर। वहां पर जितने बच्चे काम कर रहे हैं एज चाइल्ड लेबर्स, it is the responsibility of parents as well as the lawmakers, the people who are what we call as, whom we call as authorities, दोनों ने मिलकर, एक अपने इनजस्टिस से बाहर नहीं आ पा रहा, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन से काम, मतलब कि पूरा नहीं हो रहा, और उसका असर किस पर आ रहा है? ऑन द चिल्ड्रन हु आर वर्किंग देयर एज लेबर्स। Before he is aware, he accepts it as natural as his father। यहाँ पर ये जो before he is aware जो लिखा हुआ बेटा, it is not for any person, it is general कि एक बच्चा जब तक वो संभलता है, जब तक उसको ये बात समझ आती है कि he has been working as a child labor, वो अपने फादर जितना बड़ा हो जाता, and then ना चाहते हुए भी he carries on that lineage। To do anything else would mean to dare। यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज रेफर टू मुकेश के लिए। जैसे मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है, और अलग करने का मतलब है टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ऐसा वहां सिखाया नहीं है। यू कैन थिंक डिफरेंटली। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम cheered। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, मतलब मुकेश इज डेयरिंग। Why she is cheered? Because Mukesh thinks differently. Mukesh is different. He has dared to think differently। वो बिल्कुल अलग सोचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है थिंक एज यू रीड में लिखा हुआ है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? He has the daring power that he wants to become a motor mechanic। I want to be a motor mechanic। I'll go, he will go to a garage and learn। मतलब उसे उसके लिए गराज जाना पड़ेगा जहां वो सीखेगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई वॉक, ही इंसिस्ट। कहता है कि गराज उनके घर से बहुत दूर है। कहता कोई बात नहीं, मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन मैं सीखूंगा। This shows that he had the attitude of daring। He wanted to do something different। He wanted to come out of this situation। अब she makes this sarcastic comment। पूछती है जस्ट टू सी कि सचमुच में ही वो अलग सोचता है, या फिर जैसे वो होता है ना हवा में उड़ाना, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। ये आपका जो है इलेक्ट्रिशियन, मतलब वो एकदम से शांत हो जाता है। ही इज सडनली साइलेंट। नो, he says staring at the ground। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने जो है आपको बताया था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने बात की थी, और वहां मैंने लिखा है क्लास 12 इट इज ही वाज कॉन्फिडेंट। एंड यहाँ स्टेयरिंग एट द ग्राउंड जो है, दिस इज ही इज एम्बैरेस्ड। उसको शर्म आ रही है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। मीन्स अभी भी उसके अंदर उम्मीद है। देर इज सम होप लेफ्ट। वो एम्बैरेस्ड है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ही कैनॉट ड्रीम बियॉन्ड व्हाट ही वांट्स टू।
yet it has not turned into regret. मतलब अभी वो पूरी तरीके से he has not become hopeless. He is content to dream of cars that he sees hurling down the streets of his town. मतलब कि he is happy to become a car mechanic. He is hopeful of becoming a car mechanic, not any aeroplane. Few aeroplanes fly over Firozabad जो है, it is actually a transferred epithet. Means that is beyond reach. That is beyond reach. उसके रीच में मोटर मैकेनिक बनना है, उसके रीच में मोटर मैकेनिक बनना है. सो ही कैन बिकम अ मोटर मैकेनिक अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो. If he works hard, if he walks down to the other part of the town, he can definitely learn the skills of motor mechanic and open his own garage. लेकिन aeroplane fly करना, that is beyond the reach of his dreams. This is what this particular line means. From this particular Mukesh wale mein se, you might have seen that I was bit slow. The reason is कि each and every, मतलब अगर आप 10 years का question देखोगे, you will find that from each and every line there has been a question. From each and every line, I mean to say. For example, यहाँ पे लिखा है मतलब कि staring at the ground मतलब क्या? So he was embarrassed. Then his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. Matlab, he was not hopeless. Matlab, still he was hopeful that he would become a car mechanic. But becoming a pilot was beyond his reach. So each and every sentence has some meaning and there is some question that comes. That's why. Now you can see the questions which are given here. What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? Normally, हमारा जो migration होता, that is only because we don't get any what we call as employment. लोग अपने किसी भी जगह पे, not only one city to another. Why do people move from one city to another? It is because they don't get the employment. How many people are still staying in their own country? How many people are there जो अपनी ही जगह पर रुके हुए हैं? Most of the people have moved from their cities to other cities. जैसे I have many students who are right now, मतलब सालों पहले moving from Delhi to Chennai or Chennai to Delhi was something a dream. Dream मतलब not in a good sense, मतलब लोगों को पसंद नहीं था. आज हर दूसरा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अलग जगह पे रहे. Many of these people have shifted from our country to other countries. Reasons क्या है? Employment, better conditions of life, better status. That is. Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? जो उसमें उसने बोला था ना कि मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे क्या? This is because everyone is only thinking about his or her benefit. जो आपके authorities होते हैं, normally they make the promises while they come into the elections, but those are only the election promises. उससे पहले और बाद में कुछ नहीं होता. This question, third question, is a board question. What forces conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad and poor? ये वाला question है ये. The circle of sahukars, middlemen, policemen, keepers of lawyer, bureaucrats, ये सब मिलकर
जो है कंस्पायर मतलब षड्यंत्र, they are the one who have exploited them to the level that these people are living in poverty. Then ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आए थे, अब 3 मार्क्स के हैं. हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. Mention the hazards of working in the glass bangle factory. Why should child labor be eliminated? ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन था. Then these are again the 5 marker questions based on competency, based on what you call as your own thoughts. Plus you may be asked to write such questions. अब आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट अ स्पीच आ सकता है, जैसे इसमें लिखा है the beauty of the glass bangles of Firozabad contrasts with the misery of people who produce. मतलब this is something a paradoxical situation, मतलब complete irony. ग्लास बैंगल्स जिसको खूबसूरत बोलते हैं लेकिन वहां रहने वाले एकदम गरीब. तो राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 2 to 250 वर्ड्स. आपको इतना बड़ा नहीं लिखना आता है, इट्स ओनली ऑफ 50 to 70 वर्ड्स कि नॉर्मली क्या होता है ऐसे सिचुएशन में. एंड ऐसा सेम क्वेश्चन स्पीच की तरह भी आ सकता है. ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ कैन बी चाइल्ड लेबर एलिमिनेटेड, दिस कैन ऑल्सो कम एज एन आर्टिकल और स्पीच. These 2 questions, the plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling is a theme. मतलब पहला है forceful child labor, and the second one is the callousness of society and political class to the sufferings of the poverty. यानी कि इनकी responsibility है that they need to look after the needs of such people. इनको they have to make them, वहां पर चीजें होंगी तो वो उसको अवेल कर सकते हैं. How many students are there? मतलब कहने की बात होती है, but if you go to the MCD schools, if you go to the government schools, you will find if the in the attendance register, if the names are of 40 students, only 4 students are present in the class. So how do we make them? We need to make them. Yes, सर्व शिक्षा अभियान, then there are so many government schemes जिसने इस चीज को थोड़ा सा फोर्स किया है, but in how many districts? Only when there is some what you can say inspection, when there is some election, तो इन areas के अंदर ये सब चीजें हो जाती हैं, then but nobody bothers. And this is what they, not only कि ये लोग सोसाइटी में पुअर रहते हैं, they are also the burden on other people, because government doesn't run from the money which it is making, it runs on the money which we are giving as tax. तो जितने आपके इलिटरेट्स, जितने आपके मतलब कि अनएम्प्लॉयड होंगे, उतना बर्डन आपके उन लोगों पे होगा जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं. So they need to uniform it out, and these people become so, I may sound bitter, but they become so usual to freebies, muft ka, that they don't want to work hard after a certain time. This is also one problem. स्टार्टिंग इनकी होती है चाइल्ड लेबर से, धीरे 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 ये चली जाती है टुवर्ड्स अदर्स. एंड मेनी ऑफ द पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग, they become criminals. And this is how the society in whole, specifically the politicians, the authorities, they need to take care of such people. The name of the chapter, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood जो है, it justifies the name because spring का मतलब होता है something which is blossoming, blooming, and childhood हमारा वो period है जब हम अपने आप को bloom करते हैं. We grow, we are born as a small child, grow into infant,
then we grow into a child, and then we grow into an adult. तो ये वो पीरियड है जब हम खिल रहे होते हैं, when we need to upgrade ourselves with education, happiness, then joy, play, everything. लेकिन ऐसे बच्चे, मुकेश और साहिब जैसे अनेकों बच्चे जो हैं, they spend their time in earning for their family. That is why the chapter's name is justified. This has come in the exam. So that's the chapter Lost Spring.